Hello students, welcome back to my channel Knowledge is Power. So in this video lecture series of class 9th maths, we are going to understand the chapter number 2, exercise 2.4. So in this new exercise 2.4, we are going to understand the question number 1. So he is asking us to find out, he is saying determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. So there are 4 different polynomials, like this is number 1 polynomial, number 2, number 3 and number 4, and I have to check whether this x plus 1 is also a polynomial, that whether this x plus 1 is a factor of this 4 different polynomials, right? So let us check for the first case, that is x cube plus x square plus x plus 1. You have to check whether this polynomial has x plus 1 as a factor. So in this case, we need to understand that if this polynomial has to be a factor of this polynomial, then when we will divide this x cube plus x square plus x plus 1 by x plus 1, then the remainder should be completely 0. The remainder should be completely 0. So there are 2 methods to find the remainder. Basically we have to find the remainders. We have to find the remainder. और अगर रिमाइंडर आपका 0 हो जाए तो वो जो डिवाइज़र है that will become a factor. Divisor will become a factor of dividend. So x plus 1 को हमें चेक करना है कि क्या वो फैक्टर है, तो उसको हमने डिवाइज़र बना दिया, और जो पॉलिनोमियल दूसरा है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसको हम देखते हैं कैसे होगा. So in the long division method, again we have to follow the same steps. We have to find the term containing the highest power of x in case of dividend. This is that term, and this is the term containing the highest power of x in divisor. So that is x cube and x. इसको हम डिवाइड कर देंगे पहले. जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, so this will be x square, right? This will be x square. x square जो आएगा मैं इसको यहाँ रख दूँगा. That will be kept here. And next step, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, राइट? उसके बाद जो हम क्या करते हैं, ये जो क्वोशिएंट आ जाता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे डिवाइज़र से ही. कंप्लीट टू मल्टीप्लाई दिस. आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं. दैट इज़ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1. सो दिस विल बी x square into x. This will be x square into 1. So this will be x cube plus x square. यहाँ पर रख देते हैं इनको. This will become x cube plus x square. Now उसके बाद थर्ड स्टेप हो जाता है हमारा माइनस का. So this is plus, this will become minus, this is plus, this will become minus, and the new sign of this term will be minus, and the new sign of this term will be minus. अब old signs हमको हम delete कर देते हैं, and finally this and this term will be cancelled out, and they're also going to be cancelled out. Now we have x here, and this will be plus 1,
Again you have to repeat the same steps, because here the highest power of x is 1 and here also in the divisor it is 1. So they are the same powers, you have to repeat the steps. You have to repeat the steps. So we will divide. This is the remainder number 1, right? This is remainder number 1. So we'll divide this x, the x here, we'll divide it by the x here. So the answer will be 1. So यहाँ पर मैं +1 लिख लूँगा ऐसे. नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है दैट इज़, ये जो 1 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ओनली डिवाइजर से. सो दैट विल बी x + 1 माइनस, सो यहाँ पर ये प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा. So this will be minus, this will be minus. So ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है और ये +1 है और ये -1 है. ये देखिए आपका सब कैंसिल हो गया एंड रिमाइंडर इज़ फाइनली कमिंग आउट टू बी 0. सो रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि जो डिवाइज़र है दैट इज़ एग्जैक्टली अ फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड, राइट? So in the first case, the answer should be yes, it is a factor. The x + 1 is a factor of this whole polynomial in the case number 1. इसको आप शॉर्टकट मेथड से भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो. दिस इज रिमाइंडर्स थ्योरम. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डिवाइज़र होता है उसको इक्वेट्स टू 0 करते हैं. तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ -1 और इसको डिविडेंड में डाल देते हैं. तो डिविडेंड है मेरे पास x³ + x² + x + 1, इसमें डाल देते हैं. सो इट विल बी -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 1. सो -1 का होल क्यूब विल बी -1 and -1 का स्क्वायर will be +1, plus and minus will be -1 and that is +1, minus plus minus plus. So ultimately यहाँ से भी आपका रिमाइंडर 0 ही आ रहा है. So in the both the cases हमने लॉन्ग डिवीज़न किया और हमने शॉर्टकट मेथड लगाया रिमाइंडर थ्योरम वाला, रिमाइंडर इज़ 0. So therefore x + 1 is a factor for this first case. Now we'll come to the second case, that is the second part of this question. Now we'll come to second part of this question. So here the polynomial is p of x, that is x4 plus x³ plus x² plus x plus 1. So we have to check whether x + 1 is a factor of this polynomial. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं. एक तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है. one method is long division method, that is x4 plus x³ plus x² plus x plus 1. I have to divide it by x plus 1. So now the steps of long division have to be followed. तो first step क्या था हमारा? We have to search for the highest power of term in the polynomial. तो डिविडेंड में हाईएस्ट पावर वाली टर्म है x⁴ और डिवाइजर में है वो x. So you have to divide them, x⁴ upon x. So this will be x⁻3. That is x⁻3. So ये क्वेश्चन आ गया तो इसको मैं यहाँ लिख दूँगा
x raised to power 3. Now the next step will be to multiply this x cube with the whole divisor. So let us multiply x cube into x plus 1. So यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. It will be x cube into x will be x की पावर 4 plus x cube into 1 will be x cube. So यहाँ पर लिख देंगे x की पावर 4 plus x cube. Now we will subtract them. It will subtract them. So here the sign is plus, here the sign is minus, here the sign is plus, it will become minus. So the new sign of the term will become minus in both the cases. पुराने साइन को हम डिलीट कर देते हैं. So these two terms will get cancelled out, and these two terms will also get cancelled out. That is x square plus x plus 1. So now we have got x square plus x plus 1, which is the new remainder, right? Or remainder number 1, I can say. Remainder number 1. So we are going to understand that what is the highest. So we are going to understand that what is the highest power term. देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर है इसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है? एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर है x. तो अभी ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी बड़ी है, तो हमें ये स्टेप्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा. यहाँ पर वी विल हैव टू कंटिन्यू द स्टेप्स. पहले इसको इरेज कर लेते हैं ज़रा. Then we have to divide them. We have to divide x square by x. So it will come out to be x. Then we'll replace this x here. We will put this x here. And this is here. We'll multiply this by x plus 1. So now this will be x into x plus 1. So this is x square plus x, right? Now these things will come here, x square plus x, and next step will be the subtractive step. So subtract करना. So this is plus, this is minus, this is plus, this will become minus. So this is minus x square and this is minus x. So these terms will get cancelled out. ये भी cancel out हो जाएगा और ये भी cancel out हो जाएगा. So the remainder will become plus 1 here, and now this is a final remainder. Because I am saying that this is the final remainder because there is no power of x here. There is no term having the power of x, and यहाँ पर x की पावर को हम 0 मान सकते हैं और यहाँ पर x की पावर 1 है. So this is going to be the final remainder. Now as we can see that the remainder is non-zero, therefore in the second case this x plus 1, this x plus 1 is not a factor of this polynomial, not a factor. ये जो हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड किया इसके बाद हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है, दैट इज़ नोन एज रिमाइंडर्स थ्योरम. सो रिमाइंडर्स थ्योरम वाला जो मेथड है इसमें क्या करेंगे, विल जस्ट इक्वेट द वैल्यू ऑफ डिवाइज़र टू 0. सो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1, और इस -1 को हम रिप्लेस कर देंगे इन द होल दिस डिविडेंड. सो दैट इज़ x4
x की पावर 4 plus x की पावर 3 plus x square plus 1 plus x plus 1. अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए. इट विल बिकम -1 raised to power 4 plus -1 raised to power 3 plus -1 raised to power 2 plus -1, and this is plus 1. So this -1 raised to power 4 is plus 1. This -1 raised to power 3 is -1. It will be -1. -1 raised to power 2 is plus 1. So this is plus 1. This is -1. This is plus 1. So इसमें देखते हैं. This plus will get cancelled out with minus. This plus with this minus, and the final answer will be plus 1. So remainder in both the cases is same, that is non-zero. Non-zero अगर हो रहा है remainder तो you have to understand that the divisor, that is x plus 1, is not a factor. It is not a factor of this polynomial, right? So with this we have completed the second part also. So immediately let us move to the third part of this question. So now we will come to the third part. So here the polynomial is x की power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1, and we have to find whether x plus 1 is a factor of this polynomial. So steps are very simple. Treat x plus 1 as a divisor and this px as a dividend. px as a dividend. तो मैं क्या करता हूँ उसको x की पावर 4 plus 3x की पावर 3 plus 3x की पावर 2 plus x plus 1, इसको मैं डिवाइड करता हूँ x plus 1 से. तो steps are very clear for the procedure of the long division method. हमें सबसे पहले डिविडेंड की हाईएस्ट पावर वाली टर्म, x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 है. डिवाइज़र में क्या है वो x रेज़ टू पावर 1 है. सो वी हैव टू डिवाइड x रेज़ टू पावर 4 बाय x रेज़ टू पावर 1, दैट इज x raised to power 3. Now whatever this quotient is coming, we have to keep it here, that is x की power 3, and in the next step we have to multiply this x की power 3 with the whole divisor. So now let us multiply them, x की power 3 into x plus 1. So this will be x cube into x and x cube into 1. So answer will be x की power 4 plus x की power 3. So here it will come x की power 4 plus x की power 3, and we have to subtract them. Now here the sign is plus, it will become minus. The sign is plus, it will become minus. So the new sign will be minus. Let us delete the older signs, and these terms will be getting cancelled out. But this and this can't be cancelled out because there is a coefficient 3 here और यहाँ पर coefficient -1 है. So it will become 2x की पावर 3. अपने सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है. 3 - 1 is 2, और x क्यूब आपके साथ आएगा ही आएगा. देन ये जो टर्म्स हैं ये नीचे आ जाएंगे आपकी. दिस विल बी 3x स्क्वायर, दिस विल बी प्लस x, दिस विल बी प्लस 1. And let us delete this parts for the next rough work. Okay. So now this is the first remainder. This is a first
remainder or remainder number 1. Now we have to find the highest power term, that is 2x cube. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, तो still this is the power is more as compared to this power. यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हम steps को continue करेंगे. So this will be 2x की power 3 upon x. So this will get cancelled out and the answer will be 2x square. 2x square. Now we'll keep this 2x square here and we will multiply in the next step this 2x square with x plus 1. So let us multiply them. 2x square into x plus 1. So this is 2x square into x and 2x square into plus 1, that is 2x cube plus 2x square. So this will be 2x cube plus 2x square, and this will be minus. यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, and the new sign of the terms will be minus 2x cube and this will be minus 2x square. Older signs को हम delete कर देते हैं. This is deleted, this is also deleted, and now these terms will be getting cancelled out, and so now this 3 minus 2 will become x, 1x square, and this will be x here plus x, this will be plus 1. This is remainder number 2. Remainder number 2. Now again we will repeat the steps. Why we have to repeat the steps? क्योंकि यहाँ पर देखिए highest power term क्या है मेरी, x square है, और यहाँ पर क्या है, x है. अभी भी इसकी पावर ज़्यादा है, जो रिमाइंडर की पावर x की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डिवाइजर पावर ऑफ x. So we have to repeat the whole number of steps. Now again the steps will be followed. देखिए इस रिमाइंडर की जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, x है. सो दिस विल बिकम x. अगेन वो मैं x में यहाँ पर रख दूँगा, और उसके बाद वो जो x है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा विद x प्लस वाई. सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस x विद x प्लस 1. x को x से कर दीजिए और x को 1 से भी कर दीजिए. सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस x. Those terms I will put here, x square plus x. Then we will change the sign. So this is already plus, this will become minus, plus the minus हो जाएगा, and the new signs will be minus and minus x, right? Now these terms will be getting cancelled out. This will also get cancelled out. So finally we are left with 1 here. Finally we are left with 1 here. So this is remainder 3 and the final remainder, right? So now we can see that the remainder is 1 here. So it is non-zero. So therefore x plus 1 is not a factor of this third polynomial. So it is not. Answer is not. अब ये जो हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड किया, इसके अलावा भी वी हैव गॉट द शॉर्टकट मेथड दैट इज़ रिमाइंडर्स थ्योरम मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, जो डिवाइज़र होता है हमारा विच इज़ एक्स प्लस 1, उसको इक्वेट्स टू 0 करते हैं. तो एक्स की वैल्यू हो गई -1, राइट. अभी जो x की वैल्यू -1 है, हमें जो पॉलिनोमियल है इसके लिए हमें चेक करना है सब कुछ, उसमें डाल देते हैं. दिस इज x4. द पॉलिनोमियल वी हैव गॉट इज x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
plus x plus 1. So just replace this value. This will be minus 1 raised to power 4 plus 3 minus 1 raised to power 3 plus 3 minus 1 raised to power 2 plus minus 1 plus 1. So minus 1 raised to power 4 will be plus 1, minus 1 raised to power 3 will be minus 1, and plus 3 into minus 1 will be minus 3. This will be plus 3, this will be minus 1, this will be plus 1. So minus 3 से plus 3 cancel out हो जाएगा, 1 से minus 1 cancel out हो जाएगा. So finally the remainder is 1 here, which is same as in the case of long division, but ये नॉन ज़ीरो है तो x plus 1 हमारा इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, राइट. Now let us immediately come to the next part of this question, that is the last. Let us come to the last part of this question. So it is saying that the polynomial in variable x is x cube minus x square minus common bracket start 2 plus root 2 x plus root 2, and we have to find whether x plus 1 is a factor of this polynomial. So we'll firstly go for the long division method to find whether the remainder is 0 or not. This is x cube minus x squared minus 2 plus root 2 x plus root 2. We have to divide this by x plus 1. So the basic step, जब हम लॉन्ग डिवीज़न करते हैं तो हमें हाईएस्ट पावर वाले टर्म को ढूंढना है, दैट इज़ एक्स क्यूब, और यहाँ पर एक्स को. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इनको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर. उस टर्म को मुझे यहाँ पर रखना है एक्स स्क्वायर, एंड फिर इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है मुझे पूरे डिवाइजर को. Let us do that. That is x square into x plus 1. It will be x square into x. It will be x square into plus 1. That is x cube plus x square. This is x cube plus x square. Then simply we have to subtract them. This is plus, this is minus, this is plus, this is minus, this is minus, and this will be minus. Let us delete the old signs, right. Now ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, दे विल बी एडेड अप. इट विल बी minus 2 x square. Here we have got minus 2 plus root 2 x, and here we have got root 2. Now we can see that this is remainder 1, this is remainder 1. Now next step is that you have to find the highest power term of x, that is minus 2x square. यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है. So this will be minus 2x square upon x. यहाँ से ऐसे कट जाएगा, so it will be minus 2x minus 2x. तो यहाँ पर हम minus 2x लिख देंगे, and the very next step will be to multiply this minus 2x with the whole divisor. Let me empty the space here. So minus 2x into x plus 1, it will be minus 2x square, and minus 2x into 1 will be minus 2x. So basically here it comes out to be minus 2x square and minus
2x, तो इनको हम यहाँ पर रख देंगे -2x² एंड -2 ऑफ x। ये बड़ी वाली टर्म को देख के घबराएं नहीं, क्योंकि x वाली टर्म है तो वो x के नीचे ही आएगी। नाउ सिंपल, वी हैव टू सबट्रैक्ट देम। सो जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इट विल बी गेटिंग प्लस्ड, और प्लस प्लस हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गई, बट देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 + √4 x, एंड इसका ये वाला साइन होगा, सो इट विल बी +2 ऑफ x, एंड ये जो टर्म है ये एज इट इज़ नीचे यहाँ पर आ जाएगी। अब सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, इस पूरी टर्म को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। दिस विल बी माइनस, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, दिस विल बी -2x एंड -√2x, और ये वाली टर्म है साथ में +2x। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सिमिलर टर्म्स हैं, +2 and -2x will be getting cancelled out. So finally, the answer will be -√2x plus √2. So this is going to be our remainder number 2. This one is the remainder number 2. Remainder number 2. Now again we have to check it out. देखिए यहाँ पर डिवाइज़र की जो पावर है दैट इज़ 1, और यहाँ पर अभी जो हाईएस्ट पावर है x की, उसकी पावर अभी 1 है। सो वी हैव टू अगेन रिपीट द स्टेप्स। सो लेट अस रिपीट देम। वी विल डिवाइड -√2x बाय डिवाइज़र की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है दैट इज़ x, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इट विल बी -√2 एंड दिस विल बी -√2। Now up to next step is you have to multiply this by this term, complete term. So -√2, you have to -√2 into x plus 1 हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे करेंगे, it will be -√2x and it will be -√2। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। This is the final remainder. This was the remainder, right? ये सब बीच के steps थे। स्टेप्स इसके नीचे रख देते हैं। दिस इज -√2x, दिस इज -√2। नाउ वी हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट देम। माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। दिस इज अ न्यू टर्म विद अ न्यू साइन, दिस इज अ न्यू टर्म विद अ न्यू साइन। ओल्ड साइंस को हम डिलीट कर देते हैं। So now this will be getting cancelled out, और ये हो जाएगा 2 राइट। सो अब आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल रिमाइंडर है। फाइनल रिमाइंडर क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पर कोई x की टर्म नहीं है। सो दिस इज़ अवर फाइनल रिमाइंडर एंड इट इज़ नॉन ज़ीरो, एंड इट इज़ नॉन ज़ीरो तो अंडरस्टूड है कि x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस लास्ट पार्ट, द फोर्थ पार्ट। इट इज़ नॉट। अब ये तो बहुत लंबा मेथड है, इट इज़ लॉन्ग डिवीजन एज द नेम सजेस्ट। सो वी हैव गॉट वन शॉर्टकट मेथड ऑल्सो। उससे पहले हम जरा ये स्पेस खाली कर देते हैं। वी हैव गॉट सम शॉर्टकट मेथड दैट इज़ रिमाइंडर्स थ्योरम। सो हम उसमें क्या करते हैं, डिवाइज़र को इक्वल्स टू 0 करते हैं, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में डालेंगे। देखिए पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, x³ - x²। इसको पहले लिख लेते हैं, x³ - x² माइनस ऑफ 2 + √2x plus √2। सो वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। तो हम डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज़ -1 का होल क्यूब माइनस, देखिए ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया और x का माइनस अलग है, दैट इज़ -1 का होल स्क्वायर
-2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। आप देखेंगे कि -1 का जो होल क्यूब है दैट इज़ -1 एंड -1 का होल स्क्वायर इज +1। +1 इंटू -1 विल बी -1 देन माइनस, देखिए यहाँ से माइनस और माइनस को करेंगे तो इट विल बी प्लस एंड दिस विल बी 2 प्लस √2। ये माइनस और माइनस को मैंने एक साथ ले लिया दैट इज़ प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा √2। इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी, इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी -2। इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, इट विल बी +2 प्लस √2 प्लस √2। बोथ दिस will be getting cancelled out, -2 and +2, and the final remainder will be 2 √2। तो एक तो हमने इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड किया और एक हमने शॉर्टकट मेथड लगाया। बोथ केस द रिमाइंडर इज़ नॉन ज़ीरो, सो देयरफॉर इन बोथ केस द रिमाइंडर इज़ नॉन ज़ीरो, सो देयरफॉर x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस लास्ट पॉलिनोमियल। तो आई होप हमने लॉन्ग डिवीज़न और रिमाइंडर थ्योरम दोनों का मेथड अप्लाई किए फॉर दिस क्वेश्चन। आपको अगर कम टाइम होता है तो आप लॉन्ग डिवीज़न नहीं यूज़ करें, आप सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर दीजिए, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप इस लेक्चर को धीरे धीरे करके पर्टिकुलर पॉइंट्स पे रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करें ताकि हम और भी एक्साइटिंग वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। राइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।